365 काम करती है और हम सब लोग देर रात तक और प्रातः सुबह उठ करके काम में जुटते हैं। ये और इतनी बड़ी पार्टी है और इस पार्टी में हर नेता के लिए काम है, हर काम के लिए नेता और कार्यकर्ता है और हर कार्यकर्ता के लिए काम है। इसलिए सबके काम डिवाइडेड हैं, उसमें सबको अपने अपनी जिम्मेदारियों को निभाना पड़ता है और इसीलिए हम प्लानिंग इन डिटेल और प्लानिंग इन एडवांस ये दोनों चीज़ों को ध्यान में रख करके हम करते हैं। इसलिए ज़्यादा हम प्रोडक्टिविटी निकाल पाते हैं, ज़्यादा हम इफेक्टिवली काम करते हैं। नड्डा जी, लेकिन आप तो खुद मतलब हिमाचल से आते हैं, आपने वहां यहाँ लगातार रैली, लेकिन इस बार पॉलिटिक्स की अगर मैं बात करूं तो गुजरात में बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी, खैर ग्राउंड पे आके ऐसा नहीं दिखता, लेकिन मीडिया में, एंड आई हैव नो आई डोंट वांट टू शाय अवे बाय सेइंग, मीडिया में ऐसी एक इमेज बनाई जा रही है कि भाई आम आदमी पार्टी तो ऐसा पता नहीं क्या ही कर देगी। आम आदमी पार्टी, चलिए मतलब उनके नेता बोलें कि वो सरकार बना रहे, समझ आते हैं, मतलब वो क्या बोलेंगे, लेकिन आपको लगता है ग्राउंड में आम आदमी पार्टी विल रियली मेक एनी इम्पैक्ट सर? देखिए, धीरे धीरे जनता जान गई है। मैं उनका रिकॉर्ड रख देता हूं आपके जी। सामने। बनारस लड़ने गए थे, पिट के आए और बाद में माफी मांगी। फिर उत्तर प्रदेश माफी मांगी कि नहीं मांगी? उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने गए, 350 सीटों पर चुनाव लड़ा। हम मना किसको करेंगे, लड़ो भैया। 349 सीटों पर जमानत जब्त करा करके आए। फिर आपने कहा उत्तराखंड में इनकी सरकार बनेगी, उन्होंने हल्ला किया बहुत बड़ा मीडिया से। और होता क्या है, दिल्ली का एडवर्टीजमेंट उत्तराखंड में, पंजाब का एडवर्टीजमेंट उत्तराखंड में, और वहां पर वो केजरीवाल को दिखाएंगे और पैसा देंगे पंजाब सरकार से। तो आपको लगता है कि एडवर्टीजमेंट से बन गए। अब क्या हुआ कि उनका चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट तो बीजेपी में आ गया और 69 सीट्स पर लड़कर के 68 पर जमानत जब्त करा ली। तो ये तो उनका रिकॉर्ड है। गोवा गए थे, गोवा में भी पंजाब का एडवर्टीजमेंट अखबारों में भरा हुआ, बैनर ही बैनर, बैनर ही बैनर, बैनर ही बैनर। क्या निकला वहां पर? निकला ये कि 39 सीट्स पर चुनाव लड़ा, 35 सीट्स पर जमानत जब्त कर। सर आपको लगता है अभी हिमाचल प्रदेश में आपने खूब बोला, सब लोगों ने बोला जी कि वो हिमाचल में क्रीज पर खड़े बाद में हुए, आउट पहले हो गए। 67 वो तो दिख रहा था ग्राउंड। 67 सीट पर लड़े हैं ऐश्वर्या जी, 67 की जमानत जब्त होगी। अब यहां आम आदमी पार्टी आज से 3 महीने पहले आप ही लोगों ने कहा आप आ रही है, ये वो, इनका रिकॉर्ड क्या है? ये बैनर बेस्ड पार्टी है, ये एडवर्टीजमेंट बेस्ड पार्टी है। ग्राउंड पे नहीं दिखता नड्डा जी, वही मैं कह रहा हूँ, ग्राउंड पे नहीं दिखता। आप लोगों से बात कीजिए, कांग्रेस का अभी भी है। और देखिए, अगर आप ये बात कांग्रेस के लिए, मेरे को लोगों ने कहा दिया कि ये एरोगेंट स्टेटमेंट है। मैंने सबसे कहा था कि भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने के लिए 50 साल की तपस्या करो। पार्टी 2 दिन में नहीं खड़ी होती भाई साहब, और 2 दिन में समाप्ति भी नहीं होती है। मैं कांग्रेस को क्यों बोलता हूं कि कांग्रेस के साथ लड़ाई है, कि वह समाप्त होते होते भी उसके पास। मेरा अगला सवाल यही था कि आप ये बात अगर कांग्रेस के लिए बोलते तो मैं आपको काउंटर करता कि कांग्रेस का भी 20% वोट शेयर वो है नड्डा जी, जो जाता नहीं। इसीलिए मैं जानता हूं, पर जब मैं बोलता हूं कि लड़ाई कांग्रेस से होती है तो बोलते हो कि आप कांग्रेस को बढ़ा रहे हो। मैं आप कांग्रेस को बढ़ा रहे हैं? हाँ, ये ऑपोजिशन के लोग आरोप लगाते हैं कि जगत प्रकाश नड्डा, द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ द बीजेपी, वो कांग्रेस को बढ़ा रहे हैं। भाई, जिससे लड़ाई होगी उसके नाम लेना होगा कि नहीं होगा? आप पूछोगे कि किससे लड़ाई होगी जी, तो ये छिटपुट लड़ाई। हाँ, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस की ताकत बहुत कम हो गई, बहुत दिखता हो गई, और वो अब कुछ सीटों पर सीमित हो गए। लेकिन लड़ाई अगर होती है, वैसे तो लड़ाई है ही नहीं, एक तरफा है सारे का सारा मामला, लेकिन जो भी सामने दिखता है वो कांग्रेस पार्टी के लोग दिखते हैं कुछ कुछ स्थानों पर। नो, बट फिर ये तो फिर जनता के साथ झूठ हुआ ना नड्डा जी, क्योंकि जब आप, अगर आज हम गुजरात में बैठे हैं, मैं गुजरात के लोकल मतलब इश्यूज की बात करूं, आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल आते हैं, उनका ग्राउंड पे कुछ है नहीं, लड़ाई आपकी अभी भी कांग्रेस के साथ है, लेकिन वो ऐसा बनाते हैं, आप कहते हैं कि आप 24/7 365, वो उस 365 को 366 कर देते हैं, बोलते हैं हम तो 366वां दिन है नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि हम तो 366 दिन काम करते हैं जी। तो मैंने मना कहाँ किया है, करो ना भैया, लेकिन नतीजे तो तुम्हारे सामने। मैंने तो आपको जमानत जब्तों की लिस्ट बता दी। फ्रॉड और धोखा देकर के और जनता को बरगला कर, ये थोड़े दिन चलता है राजनीति में। हम मना थोड़ा कर सकते हैं, प्रजातंत्र राज है। आप एडवर्टीजमेंट की बाहर लगा दें और आप कहीं हर एक जगह अपने फोटो लगा, उसका इम्पैक्ट सड़क मतलब जनता पे तो नहीं होता। मैं कहता हूं कि 2 दिन में बनता नहीं है, तो ये उनको समझ में नहीं आता, तो मैं क्या करूं। और जैसे ही कोई भी करप्शन की, आपने प्रधानमंत्री जी ने कहा 14 से पहले ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, 0 टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन, आपने खुद कहा। चाहे मतलब हिमाचल हो, सत्येंद्र जैन पे एक्शन हुआ तो कहा देखो जी मतलब हिमाचल में इलेक्शन होने वाला है, मतलब इसलिए हो रहा है जी।
अभी कुछ भी हो रहा है, वो कह रहे देखो जी गुजरात में इलेक्शन है जी, मतलब इसलिए हो रहा है. सो हाउ डू यू काउंटर दैट? क्या इन एजेंसीज को करने की जरूरत नहीं है. उनके बारे में इमेज साफ बनती चली गई है कि उनके बराबर का झूठ बोलने वाला और उनकी पार्टी के बराबर का झूठ बोलने वाला नेता उनको इसके लिए. ये आप बोल रहे हैं जो नॉर्मली पर्सनल कमेंट करता नहीं है. ये गोल्ड मेडल देना चाहिए उनको झूठ बोलने के लिए. मैं पार्टी नहीं बनाऊंगा, पार्टी बनाई. मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, चुनाव लड़ा. मैं कांग्रेस के साथ नहीं लूंगा, कांग्रेस के साथ लेकर के सरकार बनाई. मैं क्रिमिनल्स को टिकट नहीं दूंगा. 3 तो जेल में बैठे हैं, 1 भ्रष्टाचार में बैठा है, 2 दंगे कराने के कारण बैठे हैं. मैं पानी माफिया को प्रश्रय नहीं दूंगा. 1000 टैंकर लगा करके माफिया को प्रश्रय दिया. मैं लोकपाल बिल बनाऊंगा. रामलीला मैदान में बैठे रहे 20 दिन तक. आज लोकपाल बिल कहाँ है? तो ये ऊपर अभी इन्होंने ये टीवी पर आ रहा है, आपने भी देखा. आज वो ब्रेकफास्ट कर रहे थे, कल मसाज करा रहे थे. और तो अमेजिंग है. और मनीष सिसोदिया बोलते हैं कि इन पर आरोप लगाने वालों को शर्म आनी चाहिए. मतलब बेशर्मी की तेरी हद है कि तुम एक रेपिस्ट को थेरेपिस्ट कहते हो और दुनिया की आंखों में धूल झोंकते हो. ऐसे लोगों को जो इस तरीके की झूठ बोलने वाले और जनता को गुमराह करने वाले हैं, इनको घर बैठा देना चाहिए. तो क्या मतलब इसी से आपको कॉन्फिडेंस आता है कि जब आप और आपके पार्टी के नेता बोलते हैं जी 150 से कम नहीं आएंगे गुजरात में? तो इनके कारण नहीं, इनको तो हम एक्सपोज करेंगे. हमको वोट इसलिए मिलता है, मोदी जी के प्रति अथाह प्रेम है, अटूट विश्वास है और देश की और प्रदेश की जनता जानती है कि किसने देश को बदला, किसने प्रदेश को बदला. वो भारतीय जनता पार्टी. नड्डा जी अभी तक, और ये मेरा लास्ट सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी अभी तक जो मैक्सिमम नंबर्स लाई वो 126 से 127, मतलब इफ आई एम नॉट रॉन्ग 127 2002 में. उसके बाद ग्राफ धीरे धीरे नीचे आया, 99 लास्ट टाइम आया. अब आपका प्रेजेंट असेंबली में 112 है. अगर अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कहें 150, तो लगता है क्या होने वाला है जो मतलब 2002 से लेके 2022 तक नहीं हुआ. अब इस बार क्या आप देखते हैं एज द पार्टी प्रेसिडेंट ऑफ द बीजेपी? ऐसा है, जब ये 99 आती है तो लोगों को धक्का लगता है कि क्या कमी रह गई. वो इस बार पूरा कर देंगे. तो आपको लग रहा है जो पिछली बार कमी रह गई थी वो भरपूर पूरी हो जाएगी? कर लिया, एक तरफा है. इतने साल ऐश्वर्य भाई, मैं इतने साल से राजनीति का कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूं. यह चुनाव एक तरफा दिख रहा है. मुझे तो कार्यकर्ताओं को बोलना पड़ रहा है कि भाई एकदम तुम कॉम्प्लेसेंट मत हो जाना. एंड द इशू ऑफ डेवलपमेंट कम्स, बिल्कुल कोर है. एवरी टाइम व्हेन आई कम, यू आर सिटिंग हियर इन गिफ्ट सिटी, which was the dream of Prime Minister Modi ji, which has come to a reality. We are sitting in a hotel which is in the gift city. यहाँ आईटी का हब बन रहा है, यहाँ हाईवेज बन रहे हैं, यहाँ फ्लाईओवर्स बन रहे हैं. जब भी आता हूँ तो नई चीज बनती है. अभी राजकोट गया तो ऑल इंडिया ऑफ मेडिकल साइंसेज दिख रहा है. तो ये एक परिवर्तन की एक लहर दिखती है लोगों को और लोगों को विकास के साथ जुड़ना पसंद आता है. एब्सोल्युटली. एंड वाइल एंड अभी आपने 12 रेबल्स को निकाल दिया, तो ये जो रेबल्स का इशू है कोई इतना मेजर है? बिल्कुल नहीं. पार्टी हमारी बड़ी मजबूत है, सबको साथ चलना पड़ता है और जो नहीं चलते हैं वो छिटक जाते हैं. एंड कॉन्फिडेंस इज श्योर कि 150 से नीचे एकदम अच्छे तरीके से. सो दैट्स अ वेरी कॉन्फिडेंट बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट जगत प्रकाश नड्डा जी कह रहे हैं कि देखिए सबसे बड़ी पार्टी है और जो उनका मैसेज है विपक्षी पार्टियों के लिए कि 2 दिन में राजनीतिक दल खड़े नहीं होते हैं. Thank you very much. Well, the BJP President JP Nadda over there extremely confident that the BJP will sweep to power once again in Gujarat. You can catch that interview as you play it out again in just a bit. But moving on, we take a quick look at what else is making news this morning. According to the Chief Minister's office, the Meghalaya Chief Minister Conrad Sangma will lead a cabinet delegation to meet the Union Home Minister Amit Shah today. Chief Minister Sangma had met family members of victims of the firing that took place along the Assam-Meghalaya border yesterday. A Mumbai special court will be pronouncing its order on the bail plea of the former Maharashtra Minister Nawab Malik in her money laundering case linked to activities of the fugitive gangster Dawood Ibrahim and his aides. The Ministry of Agriculture and Farmers Welfare and the Ministry of External Affairs will be co-hosting a special millet luncheon for High Commissioners, Ambassadors to India in New Delhi today. The Union Agriculture and Farmer Welfare Minister Narendra Singh Tomar and the External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar will be sharing their vision for successful celebration of IOYM in New Delhi.
Union Home Minister Amit Shah will be addressing a plenary session of the 400th birth anniversary celebrations of Lachit Barphukan at the Vigyan Bhavan in New Delhi. Uttar Pradesh's Chief Minister Yogi Adityanath will be visiting Prayagraj to address a gathering at the parade ground and felicitate tourists attending the month-long Kashi Temple Sangamam being held in Varanasi. Supreme Court is to hear a matter pertaining to felling of trees at Mumbai's RA Colony site for the Metro car shed project. The Constitution Bench of the Supreme Court will be hearing pleas challenging the centre's decision to demonetize currency notes of 500, 1,000 rupees in 2016. Maharashtra's Governor Bhagat Singh Koshyari will leave for Delhi on the 24th of November and return on the 25th. He is expected to meet the President Draupadi Murmu and the Home Minister Amit Shah. Huge fires erupted at an oil field in northeast Syria as they were targeted by Turkish airstrikes. Thick plumes of smoke were seen rising from the facility at the Catania on Wednesday. Now, amidst the Maharashtra-Karnataka border row, Karnataka's Chief Minister Baswaraj Bommai has said that Maharashtra's Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis has made a provocative statement on the Karnataka-Maharashtra border issue and that his dream will never come true. Our government is committed to protecting the country's land, water and borders. This comes after the Maharashtra Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis said that no village in Maharashtra has sought a merger with Karnataka recently and there is no question of any border village going anywhere. Now, do remember that this, of course, comes in the backdrop of the decades-old boundary dispute between Karnataka and Maharashtra over Belgavi flaring up again as both state governments are readying for a legal battle. On Monday, of course, the Eknath Shinde government in Maharashtra had appointed 2 ministers to coordinate with the legal team regarding the court case on the dispute that is set to come up in the Supreme Court. Now, the Karnataka Chief Minister Baswaraj Bommai has also said that the state has deployed a battery of lawyers, including Mukul Rohatgi and Shyam Devan, to fight its case. Now, I'm going to try and go across to Prajwal in just a bit to give us more details as to this border dispute that seems to have flared up again. Prajwal, in fact, is on the phone line with us. Now, Prajwal, to begin with, give us more details of what Karnataka's stand has been. Now, Baswaraj Bommai's statement, of course, has been criticized in Maharashtra. Absolutely. Now, the Chief Minister is going on and stating that Maharashtra has appointed 2 ministers who are Chandrakant Patil and Shambhuraj Desai to track the court case on the Belgavi border dispute in the Supreme Court. But on what grounds are they claiming is what Baswaraj Bommai is stating, because Maharashtra, on the basis of linguistic grounds, has laid claim to Belgavi, which is a part of the erstwhile Bombay Presidency that is currently one of Karnataka's largest districts. And more of, if you're looking at only the linguistic term, the Karnataka Chief Minister has also told that there is the Jat Taluk in Sangli district, Sholapur, Arpilkatte, and all these places which are in Maharashtra. But there you find more people speaking in Kannada. So on these linguistic bounds, we will also go on to claim these lands, stating that this is ours, is what Chief Minister Baswaraj Bommai has retorted. And recently too, the Karnataka government had funded and provided grants to Kannada medium schools in Maharashtra, and also they are thinking now to provide pension to Kannadiga freedom fighters living in the neighborhood states. And the Karnataka government has also come up with programs to provide water to the Jat Taluk in Sangli district, which suffered severe drought as well. So now the Karnataka government is pointing out to Maharashtra, stating that if you try to claim our land, only on the reason of linguism, then even we will also go on to claim many of its districts, and there is no compromise in Karnataka. Even giving an inch of land to Maharashtra is what the Chief Minister of Karnataka has tweeted and has writ out at the Deputy Chief Minister of Maharashtra, Devendra Fadnavis.
All right, Prajwal, of course, bringing us all those details to remember that the court case is set to come up for hearing in the Supreme Court. Now, as a letter written by Shraddha Walkar in 2020 emerged, several questions on police action have been raised. Now, in the letter, Shraddha told the police that she was being assaulted by Aftab regularly. However, no action was taken by the police in this case. Here's more. It was a murder so grisly that it has sent chills down the spine of the entire nation. On 23rd November 2020, Shraddha Walkar has written a complaint to Tulinj police station, clearly mentioning that she was threatened and also given a threat of a she will cut into the pieces, is what mentioned in the same letter that we have access. It also says that she could not be able to go to the police because it was a continuously threat that was given by Aftab Poonawala. सबसे सही ये होगा कि हम लोग जस्टिस जल्दी से जल्दी दें, उसी से लोगों को डर आएगा मन में, और society has to also work towards it. Aftab in court claimed that he murdered Shraddha in a fit of rage. But now, a letter by Shraddha from 2020 to the Palghar police shows that it was a long trail of abuse. This complaint letter was filed by Shraddha in the year 2020 and it could all have been avoided. The sitting Deputy Chief Minister says that there will be an inquiry. वो पत्र मेरे पास भी आया है, मैंने उसको देखा है, बहुत सीरियस पत्र है. उसके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं हुई, इसकी जांच हमको करनी पड़ेगी. मैं किसी पर दोषारोपण नहीं करना चाहता, लेकिन इस प्रकार के पत्रों पर कार्रवाई अगर नहीं हुई तो ऐसी घटनाएं होती है, इसलिए जरूर उसकी जांच की जाएगी. क्या आपको लग रहा है जान बच सकती थी यदि कार्रवाई कर ली तो? जी बिल्कुल, ऐसा कार्रवाई होती तो शायद जान बच भी जाती. But the question remains, what were the cops under the Uddhav government doing? श्रद्धा ने चिट्ठी लिखकर स्वयं कहा था उसकी जान को खतरा है, उसकी जान चली जा सकती है. चिट्ठी लिखने के बाद भी उस समय उद्धव सरकार थी, उनकी सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की? यदि वे वसूली खेल में लिप्त नहीं होते और तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते तो श्रद्धा की जान बच सकती थी. The police says that she withdrew the letter. कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई है. जो अर्जी दी गई थी, अर्जी के ऊपर में जांच हुई है. जांच के बाद में खुद जो कंप्लेनेंट ने लिखित बयान दिया है कि उसकी अब कोई कंप्लेंट या तकरार रही नहीं है, और जो उसका जो ये था फ्रेंड था, उसके फ्रेंड के माँ बाप ने आके उनको मतलब समझाया था दोनों को भी, और अभी उसकी कोई तकरार नहीं है, ऐसा करके उसने रिटर्न स्टेटमेंट दिया था, और जिसके चलते वो मतलब वहीं पे वो क्लोज हो गया. Speaking to Republic, Shraddha's father raises questions. जिस प्रकार से अभी केस प्रोसीड कर रहा है, उस लिहाज से आपको लगता है कि आफ्ताब पूनावाला के पेरेंट्स को भी दोषी बनाना चाहिए? जी मैंने तो वही पहले दिन से बोला है कि उनकी भी इंक्वायरी होनी ही चाहिए, सबकी इंक्वायरी होनी चाहिए, उसके भाई की भी होनी चाहिए. The threat was out there in 2020. WhatsApp chats and visuals of the injuries establish it. If Aftab was arrested then, Shraddha would be alive today. The argument that Aftab murdered Shraddha in a fit of rage falls flat. But the larger question is, could it all have been avoided if only the cops acted on Shraddha's complaint? Bureau Report, Republic TV. You are watching Republic TV, and still to come on live and breaking, Pakistan's General Bajwa extricates the army from the defeat of 1971, says it was political failure. And fugitive Nirav Modi moves a court in the United Kingdom challenges extradition.
सीट के रैली में आपने एक कमेंट की, द्वारका में इलीगल कंस्ट्रक्शंस हुए हैं, उसको डेमोलिश करने के लिए मैं मुख्यमंत्री जी को कांग्रेचुलेट करता हूं। इसकी बैकग्राउंड में कई लोगों ने कहा कि एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। द्वारका देश भर के करोड़ों लोगों की श्रद्धा का केंद्र है। बिल्कुल, देश में किसी भी जगह पे, विशेषकर दरियाई सीमा के द्वीप पर अगर इलीगल एंक्रोचमेंट होते हैं और इलीगल एंक्रोचमेंट रिलीजियस बेसिस पर होते हैं तो और बड़ा खतरा है। मैं अभी भी कहता हूं कि मैं गुजरात सरकार के मुख्यमंत्री और गुजरात सरकार के गृह मंत्री अभिनंदन देना चाहता हूं कि बड़ी दृढ़ता के साथ ये सफाई इन्होंने की है। सुरक्षा के मुद्दे पर एक सवाल मेरा ये है कि जो आपने आइडियोलॉजी की बात कही और आप गृह मंत्री है देश के, क्या आपको लगता है कि ये जो आईसिस आइडियोलॉजी वाले लोग हैं, जिहादी आइडियोलॉजी वाले लोग हैं, इस पर और क्या किया जा सकता है, इसको बिल्कुल इस प्रॉब्लम को एलिमिनेट करने के लिए? आईसिस की आइडियोलॉजी हो या जिहादी आइडियोलॉजी हो या पीएफआई पहले जो अपनी प्रवृत्तियां करता था वो हो, जिस दिन कोई भी विचार, कोई भी संगठन, कोई भी गतिविधि इस देश की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खतरा बनेगी, इसको हम सहन नहीं करेंगे और बहुत दृढ़ता के साथ इसको क्रश करेंगे। जो नया ट्रेंड बना है, ये प्रॉमिस करेंगे फ्री नौकरी, फ्री। मुझे कहता है लैमिनेटेड कार्ड बांटे जा रहे हैं गुजरात में। किसी ने कहा आम आदमी पार्टी बांट रही है कि आपको गारंटीड नौकरी मिलेगी। जो कार्ड बांट रहे हैं, उन्होंने वादे इतने दिए हैं। गुजरात का बजट है 2,42,000 करोड़ और 3,72,000 करोड़ के वादे अब तक हो चुके हैं और ये कह रहे हैं हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। गुजरात में 1960 से प्राथमिक शिक्षा फ्री है। वोट देते वक्त सब लोग अपना माइंड भी अप्लाई करते हैं, ट्रैक रिकॉर्ड भी देखते हैं और विश्वसनीयता भी देखते हैं। Huge number of government employees are on the street. There's a ruckus on the street. Their demand about increasing the DA. This is one of the important issues here in West Bengal. A gruesome murder case of Shraddha. In fact, a video has now surfaced where the video is from those days when Shraddha was studying BMM. 2 blasts went off. That matter was related to some clash about forest timbers. We have ordered a judicial inquiry. We have also referred the matter to the investigation by CBI or NI. Compensation has been announced. Person responsible has been put under suspension. But just to clarify, that has nothing to do with border. The way it is reported in national media, it was a basically clash between the villagers and police regarding certain forest timbers. There was talk between you and Meghalaya. Do you think it will hamper this? It has nothing to do with border. This was not the clash relating to the border, and I don't think that it has anything to do with the border talks. गृह मंत्री जी खुद यहाँ आइए ना हमारा अनुष्ठान में। TV and stand by for a Mega Republic exclusive news break. It is the biggest insult to the Indian Army. We bring you more after a short break. इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में कहा नो मनी नो टेरर वाली बात आपने कही, तो इस पर जितने हमारे दर्शक है और राष्ट्रीय स्तर पर दर्शक है वो जानना चाहते हैं कि इस पर और क्या किया जा सकता है। देश की आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा का सवाल है, किसी भी खतरे के लिए हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति बरकरार रहेगी और दृढ़ता के साथ आगे बढ़ेगी और भारत सरकार की सारी एजेंसियां बड़ी मुस्तैदी के साथ भारत की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए पैनी नजर रखकर सजग है। आप वीर सावरकर को लेकर कुछ भी कह सकते थे। जो लोग हिंदुत्व में विश्वास रखते हैं वो पहले से ज्यादा असर्टिव हो गए हैं। हमारी पार्टी
हमारी पार्टी के विचार, हम सब के विचार, देश का इतिहास, इस सबको साइड पर रखकर उनकी दादी के भी स्टेटमेंट पढ़ लेते तो उनको मालूम पड़ता। वीर सावरकर के जीवन को आप पूरी बारीकी से देखेंगे तो हिंदू संस्कृति, भारतीय संस्कृति के लिए उनका पक्ष और एक मजबूत विचार एक डायमेंशन है। सीट के रैली में आपने एक कमेंट की, द्वारका में इलीगल कंस्ट्रक्शंस हुए हैं, उसको डेमोलिश करने के लिए मैं मुख्यमंत्री जी को कांग्रेचुलेट करता हूं। इसकी बैकग्राउंड में कई लोगों ने कहा कि एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। द्वारका देश भर के करोड़ों लोगों की श्रद्धा का केंद्र है। बिल्कुल, देश में किसी भी जगह पे, विशेषकर दरियाई सीमा के द्वीप पर अगर इलीगल एंक्रोचमेंट होते हैं और इलीगल एंक्रोचमेंट रिलीजियस बेसिस पर होते हैं तो और बड़ा खतरा है। मैं अभी भी कहता हूं कि मैं गुजरात सरकार के मुख्यमंत्री और गुजरात सरकार के गृह मंत्री अभिनंदन देना चाहता हूं कि बड़ी दृढ़ता के साथ ये सफाई इन्होंने की है। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर एक सवाल मेरा यह है कि जो आपने केजरीवाल जी ने इस बार हिंदू कार्ड प्ले करने की कोशिश की। कोई किसी भी कार्ड को प्ले करे, भारत की जनता और विशेषकर गुजरात की जनता इतनी भूली भाली नहीं है कि एक दो टोचकों से या एक दो स्टेटमेंट से किसी और बह जाए। अरे भारतीय जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक हमने कहा था कि हम 370 धारा को जब भी हमें मौका मिलेगा हटाएंगे। एक देश में दो निशान, दो प्रधान, दो विधान नहीं चल सकते और हमने हटाकर दिखाया। Thanks for tuning in this Thursday morning. We are live and breaking. I'm Samiksha Srivastava. Let's get started with the top headlines this morning. Sensational details emerge as Mangaluru blast probe widens. Sources say cryptocurrency used to fund blasts in Karnataka. Assam cabinet holds meet in the national capital to hand over Meghalaya border violence probe to the CBI. JDS Kumaraswamy says that the party is open to making a Muslim chief minister. Is this appeasement politics by JDS now? The fight for Gujarat heats up as Prime Minister's mega Gujarat visit enters day 2. Pakistan General Bajwa extricates the army, says defeat in 1971 war was a political failure. Fugitive Nirav Modi moves UK court, challenges extradition. Now, actor Richard Chadda has come under massive fire on social media for insulting forces in a latest tweet. The actor's tweet has come in response to a statement from the Commanding-in-Chief Northern Command of the Indian Army that they are prepared to take back Pakistan-occupied Kashmir if the government issues such an order. So the actor in the latest tweet seen mocking the Indian Army and the forces and the 20 Jawans who were martyred in the Galwan clash. Meanwhile, the BJP has lambasted the actor for the shocking tweet that she has put out, mocking our forces and the sacrifice of our Jawans. Listen in. All right, we'll play out that reaction of BJP's Manjinder Singh Sirsa, but actor Richard Chadda, who is mocked Army's stand on POK and facing ire for her Galwan tweet. Remember 20 Jawans who were martyred in the Galwan clash, and the actor in her latest tweet is
she's in fact mocked the sacrifice of our Jawans, and this of course after those statements were made by the army on India's stand on POK. So actor facing flack and massive backlash for insulting sacrifice of the Galwan martyrs. BJP meanwhile coming down heavily on actor Richa Chadda and has lambasted the actor for deriding our forces. Let's listen into the reaction coming in from the BJP. रिचा चड्डा जो कि एक बॉलीवुड की 3rd ग्रेडेड कलाकार है और हमेशा ही भारत के खिलाफ आपत्तिजनक ट्वीट करने में वो सबसे आगे रहती हैं और कांग्रेस समर्थक है, राहुल गांधी की उपासक है। ऐसी रिचा चड्डा ने फिर से एक बार भारत की सेना को अपमानित करने का काम किया है। जब भारतीय सेना के उत्तरी कमांडर से ये पूछा गया कि पीओ के बारे में आपकी क्या रणनीति, और उन्होंने ये कहा कि जब भी हमें देश होगा हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के ऊपर हमला कर उसको वापस अपने साथ ला सकते हैं। ऐसे में रिचा चड्डा उस भारतीय सेना का अपमान करे, उनको मौक करे, ये कह के गलवान याद कराए। गलवान भी भारत का गौरवमय इतिहास है। हमारे 20 सैनिक जरूर शहीद हुए, लेकिन हमने चाइना के मुंह को मुंह तोड़ जवाब दिया और उसमें से एक सिख सैनिक ने 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को अपने केवल खाली हाथों से मारकर खत्म करने का काम किया चाइनीज सेना का। और ऐसे में आप उन शहीदों के प्रति अपमानजनक टिप्पणियां करो, भारतीय सेना की अपमानजनक टिप्पणियां करो। मैं बॉम्बे की पुलिस से कहना चाहता हूं, मुंबई पुलिस से तुरंत इस रिचा चड्डा के खिलाफ कार्रवाई करें, एप्रोप्रिएट धाराओं में मुकदमा दर्ज करें, ताकि ऐसे लोग जो भारत का अपमान करना, भारत की सेना का अपमान करना एंजॉय समझ करते हैं और अपनी शौहरत को बढ़ाने के लिए हमारी भारतीय सेना को नीचे लाने की कोशिश करते हैं, इनको मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके, ऐसी जिंदगी में दोबारा कोशिश ना कर सके। So there you heard BJP demanding action against actor Richa Chadda after her latest tweet in which she mocked the sacrifice of our forces and tried to ridicule the sacrifice of the Galwan martyrs. Remember, 20 Jawans, Indian Jawans lost their lives in the Galwan clash, and the actor who is deriding the Indian Army on the sacrifice of the Galwan martyrs, the tweet there on your screens right now. This, of course, after those remarks that were made by Commanding-in-Chief, Northern Command of the Indian Army, that they are prepared to take back Pakistan-occupied Kashmir if the government issues an order, to which Richa Chadda has replied and is seen outrightly deriding and mocking our forces. We have Brigadier Anil Gupta, defense expert, joining us. Sir, thank you for joining us. To begin with, these are absolutely shocking remarks, to say the least, by actor Richa Chadda. What do you make of this? Thank you for inviting me. You see, Richa Chadda, by her remarks, has proved that she not only lacks common sense, but she lacks general knowledge also. And she must realize, trying to mock the great Indian Army, which has won all the wars it's fought so far. And what to talk of Galwan? Galwan is being studied by other foreign armies as a classic battle. A battle in which unarmed soldiers killed the mighty Chinese, and not only killed them, captured them. And despite that, she's trying to mock that. Yes. And also I'd like to tell you that no general worth his salt will ever say no when asked, can you capture POK? After all, it's the business of the generals to do that, and they have to be prepared for that. But to make a mockery out of it and try to compare Galwan and POK, or the statement of the army commander of the Northern Army, I think Richa Chadda has proved beyond doubt that she is a dumb. Well, absolutely I agree, sir. And this is not to, give a platform to the actor, but we understand that we need to call out these remarks in which she's outrightly trying to demean our forces, outrightly, ridiculing the sacrifice of her martyrs, 20 Jawans martyred, and yet this actor tries to trivialize it and seen outrightly ridiculing and mocking our forces. See, this dumb actor doesn't realize that by such statements, what type of anguish and anger she is causing to the families of the martyrs. After all, those 20 brave Jawans, including Colonel Santosh, the commanding officer, who laid down their lives at Galwan, they have done for the sake of their motherland. And this dumb actor
is trying to make a mockery out of it. I think it's not only condemnable. She must apologize to the whole nation. And if nothing else, the strict action must be taken against her. Well, absolutely. Thank you for speaking to us. So Brigadier Anil Gupta there sharing his views and saying that such remarks deserve outright condemnation. These remarks that were made by actor Richa Chadda in her latest tweet. This, of course, replied to those remarks that were made by the Commanding-in-Chief, Northern Command of the Indian Army, where they said that they are prepared to take back Pakistan-occupied Kashmir if the government issues such an order. Whereas Richa Chadda, she is seen outrightly demeaning, trying to ridicule the sacrifice of our forces. When we talk about the Galwan clash, the sacrifice of our martyrs is being hailed across the globe, but there you have the actor who's trying to ridicule the sacrifice of our martyrs and trying to trivialize, to say the least, the sacrifice of the martyrs who lost their lives in the Galwan clash. So massive backlash that the actor is facing for insult to the forces, and Twitter, of course, is also abuzz over these remarks that were made by the actor. We'll try and get more reaction on this, but let's once again listen in to that reaction coming in from BJP's Manjinder Singh Sirsa, lambasting the actor and saying that there should be an action that should be initiated against the actor. रिचा चड्ढा जो कि एक बॉलीवुड की थर्ड ग्रेडेड कलाकार है और हमेशा ही भारत के खिलाफ आपत्तिजनक ट्वीट करने में वो सबसे आगे रहती हैं और कांग्रेस समर्थक है, राहुल गांधी की उपासक है। ऐसी रिचा चड्ढा ने फिर से एक बार भारत की सेना को अपमानित करने का काम किया है। जब भारतीय सेना के उत्तरी कमांडर से ये पूछा गया कि पीओ के बारे में आपकी क्या रणनीति, और उन्होंने ये कहा कि जब भी हमें देश होगा हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के ऊपर हमला कर उसको वापस अपने साथ ला सकते हैं। ऐसे में रिचा चड्ढा उस भारतीय सेना का अपमान करे, उनको मौक करे, ये कह के गलवान याद कराए। गलवान भी भारत का गौरवमय इतिहास है। हमारे 20 सैनिक जरूर शहीद हुए, लेकिन हमने चाइना के मुंह को मुंह तोड़ जवाब दिया और उसमें से एक सिख सैनिक ने 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को अपने केवल खाली हाथों से मारकर खत्म करने का काम किया चाइनीज सेना का। और ऐसे में आप उनको उन शहीदों के प्रति अपमानजनक टिप्पणियां करो, भारतीय सेना के अपमानजनक टिप्पणियां करो। मैं बॉम्बे की पुलिस से कहना चाहता हूं, मुंबई पुलिस से तुरंत इस रिचा चड्ढा के खिलाफ कार्रवाई करें, एप्रोप्रिएट धाराओं में मुकदमा दर्ज करें, ताकि ऐसे लोग जो भारत का अपमान करना, भारत की सेना का अपमान करना एंजॉय समझ करते हैं और अपनी शौहरत को बढ़ाने के लिए हमारी भारतीय सेना को नीचे लाने की कोशिश करते हैं, इनको मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके, ऐसी जिंदगी में दोबारा कोशिश ना कर सके। And we have Colonel Shailendra Singh also joining us. Sir, good morning. If I can get your thoughts, of course, outright insult by the actor. But why do you think is Bollywood silent, not a word of condemnation on these remarks where she's outrightly seen deriding and mocking the sacrifice of our soldiers? You see, let us be mature to understand what she has said. In any country, in any place as a human being, you depict your personal standard first. You make a comment, if you are a well-known person, then you will make a statement accordingly. अब रिचा चड्ढा जी है क्या? रिचा चड्ढा जी कह रहा हूँ because I am an army officer. We don't disrespect women. Yes. In spite of what they have do. My point is, Richa ji, high from by those 20 people, which you are not noticing. And by the way, Richa Chadda ji, you are depicting your own lack of knowledge. Leh is a different state and Kashmir is a different state. How are you making the two comparisons? The question asked to the army commander was regarding POK. You have anything to say on POK? Most welcome. I have we have a democracy to say, but you don't have a speak. So only sarcastic about it. So I personally feel
she is depicting her lowest possible standard for whatever reason. Yes. I think we should not get disturbed by such irrelevant people who are trying to come into prominence. Well, absolutely, sir. As rightly put by you, this speaks volumes, of the mindset of this actor. We have Wing Commander Praful Bakshi also joining us. Sir, if I can get your quick thoughts. The question I have is, on one hand, you have these actors who make billions out of these movies that are made, especially on the sacrifice of our martyrs. And on one hand, you have this actor outrightly mocking our forces and still not a word of condemnation by any actor till now. Are we giving so much of importance to the non-entities who mean nothing to us except they're making money in all these funny methods, and then to get popularity they must come into the news in the media and make a statement on China and India and something like that, especially against India, because it is a fashion to deride yourself, to get high in the opinion of others. These are the lowest quality people. Lack of IQ, lack of morality, and lack of patriotism. Totally, they are the lowest scums of the society. We must not even get bothered about them. They are absolutely, I just don't know why are we reacting to this, whatever her name is. I mean, we are talking in terms of armed forces, which is the number one aspect of the nation, where they are the protectors of the mother, and you are talking of an actress who has made a statement which means nothing. She's just trying to get popularity. That's okay. That is her bread and butter. Let her earn her bread and butter that way. It makes no difference to us. And Sir, I agree, and this is not to give a platform to the actor, but do you feel that the hypocrisy of the Bollywood stands exposed? Because there is not a word from any actor. It's been over 10 hours now that she made this remark, but not a word from any Bollywood actor till now. I'm quite certain that there are some sensible actors there. They will talk. Just give them a chance. They probably may not have understood the gravity of what has happened. Because this aspect, it will sink into these people, and those who will make the statement will make a very measured and an intelligent statement they will make. They will weigh with their words. They are not going to be just to get an instant popularity, like 2 minutes ready noodles or something like this we eat. Everything is ready and now Hazir Jawabi. This is not Hazir Jawabi going on in Darbar. This is a matter of honor of the nation, whether you're talking in terms of us who have laid the blood for the country, and here we're talking of an actress. So I just don't understand our values. Where is our values gone? How are we even valuing this statement?